Are you planning to appear in your IELTS examination in upcoming month or upcoming week? Then this video is especially for you because I'm going to reveal or I'm going to give you some important IELTS writing tasks to questions. जी हाँ, the essays which are having the highest probability. जी हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे है कि जो बारी बारी पूछे गए हैं and there is a possibility that you too will get the same question in your IELTS real examination. So stay tuned, keep watching your favorite YouTube channel IELTS with Deepak and मैं हूँ दीपक। आज आपको इम्पोर्टेंट IELTS ऐसे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ उसे प्रॉपरली प्रिपेयर कीजिए सो दैट यू विल हैव अ परफेक्ट बैंड 8+ इन योर IELTS राइटिंग टास्क टू स्पेसिफिकली। तो दोस्तों, आप चाहे कहीं से भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर रियल एग्जामिनेशन वेदर एनी सेंटर फ्रॉम द इंडिया और एनी नेबरिंग नेशंस लाइक द नेपाल, द पाकिस्तान, द भूटान, और इवन इफ यू आर अपियरिंग फ्रॉम द यूके और कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, these ऐसे questions are most important because ये कहीं बार बारी बारी रिपीट हो चुके हैं। तो let's start the number of questions कौन कौन से पूछे जा रहे हैं उनमें से। The first question is, some people think that the government should invest more in public transportation rather than building new roads. To what extent do you agree or disagree? ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्लियरली आपका स्टैंड ले लेना है कि क्या गवर्नमेंट को is it required or should government work on developing a new infrastructure of a road and transportation, or they should be focusing only and only on existing infrastructure or road network? क्या गवर्नमेंट को नए रास्ते बनाने चाहिए, नया रोड्स डेवलप करने चाहिए, या फिर जो है उसे ही मेंटेन करे? तो व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री? तो ऐसा जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप इसको 70-30 में भी जा सकते हो, लाइक गवर्नमेंट शुड फोकस मोर on maintaining the existing infrastructure and they should also develop new roads for the newly developed area, for the industrial zones or the residential colonies or anywhere. तो आप यहाँ 70-30 भी जा सकते हो या फिर you can go for exactly 50-50. It is up to you. आपके पास number of ideas क्या है, but I would personally advise you go for, I would say 50-50 क्योंकि easy रहेगा। दो idea first body paragraph जहाँ पे आप लिखोगे why government should be focusing only on developing, maintaining the existing road network, and for the second body paragraph उसे नए रास्ते क्यों डेवलप करने चाहिए। Okay, so that would be easy for you. Second question is, some believe the government should provide free education at all levels while others argue students should pay fees. So discuss both views and give your opinion. यहाँ पे आपको कहा गया है clearly that you will have to discuss both the viewpoint, like first viewpoint in your first body paragraph, second viewpoint in your second body paragraph. मैं इसके फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपका जो आइडियाज है, सपोर्टिव आइडियाज, वो ये दिखाएंगे कि गवर्नमेंट को सारे के सारे एजुकेशन, वेदर इफ इट इज लाइक प्राइमरी, द सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और इवन द कॉलेज लेवल एजुकेशन, higher education or university level education should be at no cost, should be granted or funded by the government only. तो क्यों फ्री देना चाहिए? दो आइडिया, explanation and with a supportive example. And second body paragraph, why student should pay the fees, कि बच्चों को फीस क्यों पे करनी चाहिए चाहे कोई भी लेवल ऑफ एजुकेशन हो। तो उसका जस्टिफिकेशन आपको यहाँ पे देना है कि अगर गवर्नमेंट सभी को फ्री पढ़ाएगी तो उसके पास पैसे नहीं रहेंगे, रादर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फीस पे करे, तो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट रहेगा। दे कैन मेंटेन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे कैन प्रोवाइड द सैलरी और हायर लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर द गुड प्रोफेसर्स और टीचर्स। ये सारे आपके जस्टिफिकेशन हो सकते हैं यहाँ पे। Then let's move to the another one that some believe the public transport should be completely free and funded by the government. To what extent do you agree? अभी ये है पहला जो क्वेश्चन था that was on the education. Now ये जो क्वेश्चन है it is for the public transportation, whether if it is like railways, roadways or like waterways, कोई भी हो, वो सारे का सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है फ्री होना चाहिए फ्रॉम दी गवर्नमेंट. पीपल शुड नॉट बी पेइंग इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम देयर पॉकेट. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री? तो यहाँ पे भी आई वुड से 50-50 जाए कि जो एफोर्ड नहीं कर सकते दैट शुड बी लाइक इन रेलवे में होते ना कोई जनरल कोचेस है तो उसमें फ्री रखिए.
फिर ऐसी कोची से वहां पे चार्जेस रखिए ताकि गवर्नमेंट को क्या कि परवड़े, वरना सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट डालेगी तो पब्लिक को एक तो वैल्यू नहीं रहेगी, बिगाड़ेंगे, दे विल मिस यूज, दे विल डैमेज द प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, एंड it would be helpful for the government if people will pay at least a minimum amount of fare. Government would be capable enough to maintain the existing transportation infrastructure, the transportation vehicles, even will be able to pay good amount of salary to the workers, to the drivers, to the engineers or to the maintenance staff. तो उसके लिए भी सही है, लाइक गो फॉर दी 50-50 यहाँ पे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक सम पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट शुड स्पेंड मोर मनी ऑन हेल्थ केयर रादर देन the other areas such as defense and space exploration. To what extent do you agree, disagree? ये जो चार यहाँ पे चारों क्वेश्चन है दैट इज ऑन द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसे हेल्थ केयर में डालने चाहिए रादर देन दी अदर डिफेंस सेक्टर और दी स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो आप कितने हद तक अग्री है? तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में आपको दिखाना है द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर. अगर गवर्नमेंट हेल्थ में इन्वेस्ट करेगी ज्यादा तो क्या होगा? दैट वुड बी एज लाइक द यूथ और द लाइक पॉपुलेशन ऑफ द specific nation would remain healthy, which helps nation to grow faster, to grow rapidly. और दूसरा है that the defense is also important. second body paragraph में आप ये देखा है कि defense is also important because the defense ministry or defense, the army, the military people, the weapons and all that secures the people inside the nation. तो वो भी जरूरी है. एडिशनली गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन करेगी, सैटेलाइट लॉन्च करेगी, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, टेलीफोन टेली इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा डेवलप होगा. वो भी दिस इज लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर नेशन टू डेवलप रैपिडली. तो अब यहाँ पे क्लियर और क्रिस्टल क्लियर बैलेंस व्यू में आप अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे दे सकते हो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग दैट children should begin learning a foreign language at a primary level, while other group of people argue that the education or learning a foreign language should be start from a secondary school education. Discuss the both views and give your opinion. Means कि आपको यहाँ पे कोई choice नहीं है, clearly आपको बोला गया कि you will have to discuss the both views. The first view is that children should start learning international language, the foreign language at their early age, at the प्राइमरी एजुकेशन लेवल. तो अगर जल्दी शुरू करेंगे, व्हाट इफ वी स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज एट अर्ली स्टेज, व्हाट वुड बी द बेनिफिट? और इसके साथ आपको अगर दूसरा बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो गो फॉर द डिसएडवांटेजेस. मींस के सिंगल एडवांटेज एंड सिंगल डिसएडवांटेज विथ सपोर्टिव आइडियाज, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल. सेम वे फॉर द सेकंड बॉडी पैराग्राफ, आप वहां पे डिस्क्राइब कर दीजिए कि व्हाई इट वुड बी एसेंशियल और बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट not to start learning the foreign language at the early age, but later on, like later stage of their life, like I would say in the secondary education, higher secondary education, or the university level of education. That what would be the advantages and what would be the disadvantages of such a scenario? एक एक दिखा दीजिए, that would be enough. Let's move to the another question. Is some argue schools should prioritize life skills such as teamwork and problem solving instead of focusing only on academic subjects. To what extent do you agree or disagree? यहाँ पे आपको like the examiner or the like the writer is asking that school को only and only academic subject like the science, the chemistry, the physics, the math, the biology और sociology, ये जो सारे subject है वो ही सिर्फ नहीं पढ़ाना चाहिए, उसके साथ साथ similarly school has to focus on some other subjects like life skill, social skill, communication, behavior, people management, time management, and what is the value. तो दो पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है? फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ, गो फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स, पहला ये रहेगा. एंड सेकंड वुड बी फोकस ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट, के उससे क्या होगा? बच्चे का करियर बनेगा, will have a good job opportunity, employment opportunity, higher level of income opportunity, or like they can start their own business if they have specific academic skills. दोनों पैराग्राफ में आप बैलेंस व्यू दिखा दीजिए. Then the next question is some people believe
the online learning is as effective as a classroom learning. To what extent do you agree, disagree? यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों के बैलेंस व्यू यहाँ पे भी अगेन दिखा दीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन के like what are the advantages of taking online education and what are the disadvantages of taking online education. On the same way, in a second body paragraph, you should be discussing the advantages and disadvantages of a classroom learning. दोनों के अपने अपने प्रोज हैं, दोनों सिचुएशन के अपने अपने कॉन्स हैं. तो गो फॉर दी आइदर, दोनों के दो दो एडवांटेजेस दे दीजिए या फिर दोनों के एडवांटेज एंड disadvantage. It would be like, I would say, mix and match, like a balanced view approach. Okay. Then next question is like, some people think society benefits more if students study business subjects rather than history or literature. To what extent do you agree or disagree? Again, आपको यहाँ पे clear choice है. You can describe whatever your level of ideas that you is possessing or you are having in your brain. यहाँ पे कहा गया कि जो स्टूडेंट है वो लाइक बिजनेस रिलेटेड स्टडी करेंगे, that would be much more beneficial for the entire society, not by studying some other subjects like the art, the literature or the language. उससे कोई फायदा होता नहीं है. तो यहाँ पे भी आप बैलेंस अप्रोच दिखा है. आई वुड से कि इफ बिजनेस स्टडी करेंगे तो क्या होगा, दे विल बी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, दे विल बी लाइक सक्सेसफुल एम्प्लॉय, they will like contribute a lot to the society, contribute a lot to the development of a nation. एक बॉडी पैराग्राफ में दिखा दीजिए फॉर द सेकंड बॉडी पैराग्राफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन ह्यूमन लाइफ, द म्यूजिक, द राइटिंग स्किल, द लिटरेचर, द लैंग्वेज. उसके बारे में भी आप एडवांटेजेस ऑफ दो सिचुएशन, लाइक यू कैन डिस्क्राइब अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन ह्यूमन लाइफ, और इवन you can describe about the importance of the literature, the books, literature on different social sectors like the humanity, relationship, it can be the family life. आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही टॉपिक दिखाने, नॉट लॉट. ओके, सिंपल आपको यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर लाइक फॉलो करना है. दैट वुड बी लाइक, आई वुड से फर्स्ट गो फॉर द आइडिया, start your idea, writing by idea, explain the idea with your supportive example. That would be more beneficial, I would say, and you will have a greatest balanced approach which is going to impress the IELTS examiner, and you will have a definitely band 8 plus in your first attempt. Next question is, intelligence is the most important quality. Intelligence is the only or most important quality in a team leader और इन ए मैनेजर. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री? दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, अभी लास्ट वीक ही पूछा गया है इन 4 सेंटर इन इंडिया. 4 सेंटर में इंडिया में पूछा गया है. इट इज क्वाइट इजी. आपको क्या करो, फर्स्ट फोकस ऑन लाइक रीडिंग द क्वेश्चन ओनली. रीड इट once, twice, 3 times, 4 times, 5 times. कीप रीडिंग इट until and unless you get the exact idea. आपसे क्या पूछा गया है एग्जैक्टली समझिए. ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, इंटेलिजेंस इज द ओनली क्वालिटी इन लीडर. तो क्या इंटेलिजेंस से सब चलेगा? नहीं. तो आपको यहाँ पे भी बैलेंस, क्योंकि क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री डिसएग्री, आपको यहाँ पे भी बैलेंस अप्रोच दिखाना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इन अ टीम लीडर और इन ए मैनेजर, हाउ इट्स गोइंग टू हेल्प टू द कंपनी और टू द स्टाफ और टू द एंटायर कंपनी. पहले बॉडी पैराग्राफ में आप ये दिखा दीजिए. फॉर द सेकंड पैराग्राफ आई वुड एडवाइज गो फॉर द अनदर क्वालिटीज दैट ईच लीडर शुड बी पोजेसिंग. लीडर के पास होनी चाहिए फॉर द लाइक द कम्युनिकेशन, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल, द कम्युनिकेशन, द रिलेशनशिप, द बिहेवियर, हाउ ही इज मेंटेनिंग द एंटायर टीम, हाउ ही इज मेंटेनिंग द रिलेशनशिप, एंड हाउ इट्स गोइंग टू beneficial for each and everyone, including the company and the progression, financial progression, or in a growth, in a way of a growth for the company. आप यहाँ पे दोनों का बैलेंस अप्रोच दिखा सकते. आप जब भी ऐसे को लाइक लिखते हो, आपको क्या ध्यान रखना है, अभी है बहुत सारे क्वेश्चन है, बट व्हाट आई वुड से, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे के सारे जो क्वेश्चन है एडिशनल, वो सभी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप वहां से चेक कर सकते हो सारे के सारे ऐसे. और कोई भी ऐसे अगर आपको लाइक इफ यू फील समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग स्टक विथ सम आइडियाज, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द एसे, व्हाट एग्जैक्टली द एसे इज डिमांडिंग, यू कैन कमेंट इन बिलो.
I will approach you and I will help you out sort out the question so that you will have a perfect band score in your first attempt in your IELTS. तो आप कमेंट्स में सारे क्वेश्चन देख लेना. And moreover that I would give you advice is last but not least I would say the advice is that कि आपको क्या करना है, पहला तो टास्क पे ध्यान दीजिए, मीन्स के क्वेश्चन क्या है उसी पे लिखना है. सेकंड आपको ध्यान रखना है आपकी लैंग्वेज, जब आप लिखते हो फॉर्मल होनी चाहिए. Like I believe that my uncle went somewhere, not like it should not be person centric. Your approach should be omniscient view of people rather than my uncle. You should be writing the people. समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? Like it should be formal presentation, not the informal. Third, you have to focus on your grammar. First, fluency maintain कीजिए, accuracy maintain कीजिए. First, when you have accuracy, then like try to create a range in terms of like a grammatical tenses, past, present, and future. Then go for the simple, compound, complex sentences. आप ये लिखिए. वोकेबलरी जो आपकी है उसके ऊपर फोकस कीजिए. फॉर्मल वोकेबलरी होनी चाहिए, टॉपिक रिलेटेड होनी चाहिए, डिफरेंट वर्ब्स, नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, पार्टिसिपल्स एंड gerund. But be careful, don't use any fancy vocabulary because many students try to impress the examiner by using the fancy words but mess up हो जाता है. Don't use it. Simple, straight away, straightforward presentation will help you to get a good band score. और कैसा होता है straightforward presentation या फिर एक सिंपल प्रेजेंटेशन फॉर्मल वे में, तो उसके रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियोस फॉर दी एंटायर आइल्स ऐसे कैसे हो सकते हैं उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल, हमारे इस यूट्यूब चैनल आइल्स विद दीपक में अपलोड किए हुए हैं. आप वहां से चेक कर सकते हो. एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न रिलेटेड टू नॉट ओनली एज राइटिंग टास्क 2, आप एकेडमिक आइल्स दे रहे हो या जनरल दे रहे हो, कहीं पे भी आपको कोई भी क्वेरी है, कंसर्न है, डाउट है, इश्यू है, यू कैन कमेंट बिलो. मैं आपको पर्सनली अप्रोच करके आई विल हेल्प यू. और इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर द असेसमेंट सर्विस, if you are looking to assess your speaking or your writing, I will help you to assess it and also help you or will point out some like your errors so that we can improve it and you can get a good band score. So दोस्तों ये थे आज के important IELTS topic, IELTS writing task. तो ऐसे topic जो having a higher level of probability and I think you must know about it. तो पूरा वीडियो देखिए. अगेन आप मेरी चैनल में सारे के सारे वीडियो देखिए और इस चैनल को अब तक आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके. थैंक यू सो मच बीइंग विथ अस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्पेशली आइल्स.